Good morning students. Today we will discuss about HCF and LCM. HCF means highest common factor, means a greatest number which may divide another two or more than two numbers without leaving any remainder. Okay, let me write it. A greatest number which will divide two or more than two numbers without leaving any remainder. Okay, HCF, highest common factor. I told you, a greatest number which will divide two or more than two number without leaving any remainder. Okay, इसको अच्छे से समझने के लिए let me give you some example. Okay, example is find out the HCF of 24 and 36. Let me rub now beta. Find out the HCF of 24 and 36. By two methods we can solve it. ठीक है, let me do both the method. This is prime factorization method, ठीक है, and this is division method. Firstly, I want to cover it with prime factorization method. Here, prime factorization method, this is 24. Okay, इसको आपने prime factorization से solve करना है. This is 2 12 जा, 2 6 जा and 2 3 जा. Okay, this is 36. This is 2 18 जा, 2 9 जा, 3 जा. This is okay. No need to write down here 3 1 ja, because 1 you know well, this is not a prime number. That's why बेटा इसको आपको लिखने की requirement नहीं है. That's why this is okay बेटा up to this. यहाँ तक काफ़ी है. Now write here factors of 24. This is 2 into 2 into 2 into 3. And factors of 36. This is 2 into 2 into 3 into 3. Okay. Now this is common. Yes, this is common beta, because ये दोनों में है. That's why common. Once again, this is also a common, and this is also a common. ये common है, दोनों में है ना. That's why common. तो आपने क्या लिखना है? common, ये दोनों, ये हैं, दोनों में है, common है, but आपने सिर्फ single time इसको लेना है. आपने इस पेयर में से एक 2 को लेना है, इस पेयर में से भी एक 2 को, और इस पेयर में से 3 को. तो 2 into 2 into 4. 2 2 जा 4, 3 जा 12. तो 12 is your HCF, highest common factor. Means this is the number, this is the highest number which can divide 24 as well as 36 exactly without leaving any remainder. This is very simple question beta. In the same way, in case of division method, इसमें आप ये देखें कि which one is larger,
बड़ा कौन है? यू नो वेल कि 36 इज ग्रेटर देन 24। दैट्स वाई बेटा आप 24 को यहाँ डिवाइज़र और इसको 36 को डिविडेंड बना लें। यस 24 1 जा 24, दिस इज 12। इन दिस मेथड व्हाट विल हैपन, क्या होगा बेटा इसमें कि जो यह रिमाइंडर है नाउ दिस विल बिकम डिवाइज़र, और जो प्रीवियस डिवाइज़र था नाउ इट विल बिकम डिविडेंड, ये डिविडेंड बन जाएगा बेटा ये 24। तो 12 2 जा 24। ओके, आप लिखेंगे HCF ऑफ 24 एंड 36 इक्वल टू दिस वन। यस, जो लास्ट डिवाइज़र रहता है इसमें यही HCF होता है बेटा, तो दिस इज 12। तो हमने डिस्कस किया अबाउट HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर दिस आई गेव यू वन एग्जाम्पल ऑफ 36 means to say I gave you one question, find out the HCF of 36 and 24. I told you about two methods. One method was factor tree method and second method was division method. ठीक है, आपने दोनों मेथड्स में से बाई चांस आपके एग्जाम में आता है कि सॉल्व इट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यस ऑन दैट टाइम बेटा आपने ऐसे ही करना है। एंड इफ दे आर नॉट सेइंग यू एनीथिंग, दे आर सेइंग यू ओनली वन थिंग कि फाइंड आउट द HCF ऑफ दिस वन, तो बेटा आप दोनों मेथड्स में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो दैट वाज अबाउट HCF। We will discuss about LCM, least common multiple. Least common multiple, the smallest number, this is the definition of that LCM, the smallest number that can be divided by the given numbers without leaving any remainder. Let me repeat, the smallest number that can be divided by the given numbers without leaving any remainder. This is called LCM, least common multiple. Let me clear you this definition with one example. Example is find out the LCM of 24 and 48. 24 and 48. Okay, for this you can opt two method as you did in HCF, prime factorization method as well as long division method, or you can say common division method. Okay, firstly with prime factorization method, this is 24, this is 2 12s are 2 6s are 2 3s are, okay, this is 48, 2 24s are 2 12s are 2 6s are 2 3s are, okay. Right here factors of 24, yes, 2 into 2 into 2 into 3, yes, these were the factor of 24. Right here the factor of 48, factors of 48, this is 2 into 2 into 2 into 2 into 3, okay. Let me check about the common, okay, least common multiple. This is common but similar as you did in HCF by prime factorization. ये common है, this is a pair, you will take only one element from it, okay. This is also a common,
this is also common and this is also common. Okay, common. So now LCM of 24 and 48 equal to, yes, one element from this pair, 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 but still यहाँ पर 2 बच जाता है, इसका पेयर नहीं है, बट बेटा लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम में जो बच जाता है आफ्टर कॉमन, यू मस्ट मल्टीप्लाई दैट नंबर आल्सो विद द गिवन नंबर्स, वो भी आपको मल्टीप्लाई करना है. तो दिस इज 2. ओके, तो दिस इज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48. ओके, तो LCM ऑफ 24 एंड 48 लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स टू से आपको बताया द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर्स विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर. तो 48 बेटा 24 से डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता. इन द सेम वे 48 से भी डिविजिबल है विदाउट एनी रिमाइंडर. तो दैट वाज अबाउट LCM. तो आपके पास जो अभी आपने किया है दैट इज अबाउट योर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. दिस इज योर फर्स्ट मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बट स्टिल वन मोर मेथड इज देयर. दिस इज कॉमन डिवीजन मेथड. Let me tell you about common division method of LCM, and we will take same example 24 and 48 for common division method. Okay beta, let me rub this. This is about common division method. Yes, this is 24 and 48. Okay, 2, this is 12 and this is 24, this is 6, this is 12, this is 3, this is 6, once again 2, this is 3 तो डिविजिबल नहीं है, ऐसे ही रहने वाला बेटा, बट 2 3s are now 3, this is 1 and 1. now factors of 24 and 48 equal to 2, 1 2 3 4, 4 times 2, 2 2 2 and 3, 1 times 3, 2 into 2 into 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48. yes, तो you can choose any method to solve LCM, whether you will choose prime factorization or you can choose division method, common division method. By any method you may solve the given question. सभी questions same है बेटा, that's why you may opt any method. but बेटा if examiner will say you कि solve this LCM with the help of prime factorization method only, तो आपको prime factorization ही करना है. if आपके पेपर में आता है कि solve this question by any method, or you can say find out LCM of this question, तो on that time बेटा this is up to you कि which method you are using, prime factorization method और common division method, कौन सा method आप यूज़ करते हैं. ओके बेटा, that was about LCM.